As we say, well begun is half done. The Honourable Minister came, inaugurated and went, and then we had the learned address of the Chief Guest, Honourable Manar Jhaladi, and you gave the theme presentation. Initiation was done by the Pangarji Maharaj. So all dignitaries have been saying a lot of things. We have with us Honourable Jitendra Tripathi ji, जो दिल्ली में DCP भी हैं, विद्वान हैं, कला के प्रेमी हैं, और हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि पुलिस की विकासात्मक भूमिका क्या हो। पुलिस को देखते लोग डर जाते हैं, घर बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम आने वाले दिनों में बहुत सारा होगा। पर्यावरण संरक्षण में उनकी क्या भूमिका होगी, मानव अधिकार के संरक्षण में क्या भूमिका होगी, वृक्षारोपण में क्या होगी, कचरा प्रबंधन में क्या होगी, प्रदूषण मुक्त मस्तिष्क को बनाने में पुलिस की भूमिका क्या होगी, और खासकर पुलिस की जो मनोवृत्ति है वो कैसे विशुद्ध होगी। मनोवृत्ति शुद्धिकरण के बारे में भी बड़ी उम्मीदें हैं हमको त्रिपाठी जी से। तो अब मैं इसके पहले कि त्रिपाठी जी को अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाऊं, कुछ किताबें हैं जिसका भी लोकार्पण होना है। Friends, we have with us our Chief Guest of Honor, the learned Chief of Chancery, Head of Chancery of Azerbaijan Embassy, Mr. Jehun Elias. Please give a big hand. And we call upon Dr. Tanuja, please bring flowers and offer flowers to our Excellency. Friends, we would like to also request the Head of Chancery of Azerbaijan Embassy, Mr. Jehun Elias, to kindly release this important publication, Judaism and Jewish Philosophy. This is a book, very important book. We call upon Your Excellency, sir, to kindly release this publication. There is another book. The किताब है ग्लोबल इंटरफेथ मूवमेंट। इसे हमारी टीम ने तैयार किया है, और सर्वधर्म संभाव की बात की कितनी आवश्यकता है ये सब जानते हैं। Friends, we are aware of the urgent need of having interfaith dialogues, and for that matter we say unless we have the interfaith education promoted in the schools, colleges and universities, very unlikely that we will reach the milestone of success. Anishekhar? So, this book will be released by the Pangarji Maharaj. मुझे एक बात याद आ गई। एक हमारे बाबा अक्सर कहते हैं कि धर्म नहीं है बस माला घुमा देना, उससे आगे भी है कि किसी भूखे को खिला देना, किसी रोते को हंसा देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सकारात्मक भूमिका प्ले करें। Thank you so much. There is another book, Interfaith and Spirituality. Interfaith and Spirituality is an important book brought out by us, which is a part of the World Encyclopedia of Interfaith Studies. We have brought out a 10-volume World Encyclopedia of Interfaith Studies, and one of the volumes is Interfaith and Spirituality. May I call upon Jitendra Tripathi, the DCP here. This book will be presented by Vaaruni Dhawan. Please present it to Tripathi ji for publication.
psychology. As we had today got released the 50-volume World Encyclopedia of Women's Development, which was released in the CD format by the Honorable Minister, who inaugurated and just left because of the Parliament session. This book is a part of that, Feminine Psychology. And may I call upon Dr. Tanuja, the Chief Editor, to kindly present this to my friend Javeer Sergilji, with a request to him to kindly release this publication. Friends, we will call upon Dr. Dignitaries, please come and present this important publication to our chief guest, Manohar Jalaji, who is the Union Minister of State rank, Chairperson of the National Commission for Safai Karmcharis. The request to him to kindly read this publication. बहनों भाइयों, अब मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी जो डीसीपी हैं दिल्ली के, उन्हें अनुरोध करूंगा इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करेंगे। मंच पे उपस्थित ऑनरेबल त्रिवेदी सर और तमाम जो सम्मानित मंच पे आसीन हैं वो तमाम महानुभाव और यहाँ उपस्थित जो तमाम सज्जन हैं और बच्चों, जैसा कि बहुत चर्चा सुनी हमने जो आजकल के बच्चे हैं उनमें जो मोरल वैल्यूज जो बात हो रही थी, मोरल वैल्यूज की बहुत कमी है। और इसका कारण यह है कि कहीं कहीं अगली जो पीढ़ी है वो भी साइबर वर्ल्ड से जुड़ गई है। बच्चों को बजाय कुछ ट्रेन करने के, उनको एजुकेट करने के, वो खुद भी अपना कहीं न कहीं एंगेज है और जो अगली पीढ़ी है वो कहीं न कहीं विनाश के कगार पे जा रही है। जो धर्म की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, मोरल एजुकेशन की बात है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। स्कूलों में भी कहीं इस तरह का मतलब क्लासेज अलग से नहीं होती हैं। बच्चे और क्षेत्रों में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये बातें हैं, माँ बाप के प्रति उनका एक सम्मान का जो भाव होना चाहिए, जो गुरु के प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए, वो चीज़ें लोगों को सिखाई नहीं जा रही। हमारा धर्म जहाँ तक बात है कि वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट लेके चलता है, तो पूरी दुनिया ही हमारा कुटुंब है। तो कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारी परिकल्पना तो बहुत ही उदात्त है। जो ग्लोबल विलेज जो आजकल चल रहा है, ग्लोबल विलेज, उससे कहीं आगे हम हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो विलेज से ज़्यादा आत्मीय कॉन्सेप्ट रखता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा उदात्त है। ज़रूरत है उसको फॉलो करने की। शांति की जहाँ तक बात है, जो बातें हो रही हैं, हमारे जितने सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे मंत्रों में सबके सुख की कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। तो कंसेप्ट हमारा बहुत ही उदात्त है, बहुत ही ब्रॉड है और हमारा धर्म भी बहुत ब्रॉड है। ज़रूरत है नई पीढ़ी को संस्कार देने की, ज़रूरत है आधुनिकता के साथ परंपरा जो हमारी है उसको मेंटेन रखने की प्रति, अपनी जो नैतिक शिक्षा है उसके प्रति भी डिवोटेड रहें, अपनी अगली पीढ़ी को वो चीज़ें हैंड ओवर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा समझे कि माँ बाप की महत्ता क्या है, एक बच्चे के जीवन में कितना डिवोट करते हैं वो, कितना सेंटिमेंट जुड़ा है उनका उनसे।
आज बच्चे बहुत तेज़ी से कंप्यूटर की तरफ भाग रहे हैं, गेम्स की तरफ भाग रहे हैं, इनको हम कहीं ना कहीं ट्रेन नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें रखी जाएँ, जो भी आगे कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मोरल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब बार बार चीज़ें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, तभी कहीं वो इन चीज़ों को आगे फॉलो करेंगे। खासकर जो मैं फिर कह रहा हूँ कि गुरु और माँ बाप की जो महत्ता है, ये 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसके प्रति अगर बच्चा डिवोटेड होता है तो उसके आगे अच्छे इंसान बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। एक बच्चा अगर माँ बाप पर समर्पित है, उनका आदर करता है, कुछ गलत काम करने के पहले 10 बार सोचेगा। हमें कानून और उससे ज़्यादा समाज का भय होता है, अपने माँ बाप के आदर का भय होता है, उनके सम्मान का भय होता है। अगर हम उन्हें मानते हैं कि हम अगर ये गलत काम करेंगे तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, अगर उनके पास बात की जाएगी, ये बहुत बड़ी एक मतलब कंट्रोलिंग पावर होती है। कोई भी बच्चा जो इस तरह की सेंटिमेंट रखता है वो बड़ा गलत काम नहीं कर सकता, सिर्फ माँ बाप के रिस्पेक्ट के कारण, उनके प्रति एफिलिएशन के कारण। हम लड़कियों को सिखाते हैं बाहर जाओ, बाहर मत जाओ, लड़कों को नहीं सिखाते कि बाहर मत जाओ। लड़के बाहर जाएंगे, मोटरसाइकिल से घूमेंगे, 3 बजे रात में आएंगे, तो कहाँ से आ रहे हैं कोई नहीं पूछता। तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को हम समझा रहे हैं, दूसरे को हमने फ्री छोड़ दिया और वही क्राइम करते हैं। हम कहीं अपने आप में बड़े लिमिटेड हो गए हैं, प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि मैं फिर कहूँगा कि एक हमारी बहन है, कहीं और गई है, उसकी किसी और की बहन यहाँ है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, हम रोकते नहीं। तो आपकी बहन के साथ वहाँ गलत होगा, आप वहाँ कोई रोकेगा नहीं। ज़रूरत है अवेयर होने की, ज़रूरत है इसको यहाँ बचाने की, तभी हो सकता है हमारी बहन को कोई वहाँ बचाएगा। तो अपनी विचारधारा को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, समाज से जुड़ना पड़ेगा और धर्म और संस्कार के प्रति अपनी नई पीढ़ी को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर संस्कार और धर्म खत्म हो गया जीवन से तो आधुनिकता सिर्फ रह जाएगी, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विचारधारा को उसमें समावेश किया जाएगा। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, आपने मूल कारण क्या है उस पर प्रकाश डाला, बच्चे आक्रामक क्यों हो रहे हैं और नैतिक मूल्यों में कमी क्यों आई है, इस पर आपने प्रकाश डाला और आपने उदाहरण के लिए कई बातें कही, इतनी माकूल है। आज के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को समझना पड़ेगा और हमारा जो करिकुलम है इसमें इन बातों का भी समावेश होना चाहिए। किस प्रकार जो कमियां हैं वो दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Friends, we are pleased to invite Dr. Gregory Bergland to come and join our dais. Dr. Gregory Bergland. Dr. Gregory Bergland has come all the way from USA. He is the CEO of the Planet Earth and he has been a visiting professor at our place for the last 25 years. He will also present his views on a very pertinent topic which is related to spiritual emergency. Please come and join our dais first. We have great pleasure inviting. Yeah, please. Where everybody go? Yeah, please come here. I want these people to come back in if they're going to listen to my talk. Okay. हमारे स्वयंसेवी बाहर में जो विद्यार्थी चले गए हैं उनको बुलाने का कष्ट करें, उनको प्रेरित करें कि वो बार बार बाहर न जाएं फोटो खिंचाने के लिए। मैं देख रहा हूँ जो बैकड्रॉप है जहाँ हमारी तस्वीर लगी है, मैं खुद ही खड़ा हूँ, मेरे बगल में खिंचा लें, वहाँ उनके बगल में खड़े होने से फायदा नहीं है। मुझे इस बात की गलतफहमी है कि शायद मैं कोई और हूँ, मेरी टोपी वहाँ अलग है और यहाँ टोपी अलग है। तो वो समझते हैं कि राष्ट्रपति जी से मिलते हुए कोई महान पुरुष खड़े हैं, जो ये खड़े हैं वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फोटोग्राफी भी हो जाएगी, वो भीतर आ जाए जल्द से जल्द। मैडम ब्रिगेडियर एलिजाबेथ कीन, यू कैन कम हियर। To invite Dr. Gregory Bergland, who is the CEO of the Planet Earth and who has been very close to us for the last 25 years. We will let you know about
our association with him after his speech is over. Dr. Gregory. Kya haal hai? Kaisi hai? Okay, but my talk today will be in French. Donc, qui parle français ici? Qui connaît le français? Nobody knows French. Has anybody here had a mystical experience and would like to talk about it? Yes? You said yes? Has anybody here today had a spiritual illumination and they would like to share it with us? We have one student, but he knows only a little bit. But he what? He got a French student Priya. Guests in the auditorium? Is this fellow on his way up? Yeah. Okay. I'm going to speak from experience. I didn't get it in books. Hello. How are you? Okay, you'd like to share with me, okay? But you're too shy to address an audience? Well, that's understandable. And you have a question for everybody. If you have had a strong mystical experience or a spiritual illumination, do you think it would be a mistake to talk about it? No? You should share it. We kind of agree? Okay. So you're free to share. Imagine that you can no longer be who you are. Excuse me? Excuse me? Are you... Okay. What I said was, imagine that you can no longer be who you are. Do you think it could be true of what we refer to as humanity, humankind, all human beings on the planets? Do you think we can continue existing and living as we do today? Or must we change? Let's suppose you're an individual. What would you do if you are disgusted with your person and you want change? What could you do to free yourself from what I call an existential trap? Your existence is not going in the direction that you would like, and you need change. Imagine that instead of gaining freedom from your dilemma, which means the freedom to change and to become different, imagine that instead of gaining that freedom, you are committed to a psychiatric institution, labeled, locked up, forced drugged, put into confinement. And this happens to a lot of people today who get diagnosed as psychotic, as having broken from reality. They might get labeled paranoid schizophrenic. This happens to people across the world. It is said that 1% of every society is schizophrenic and psychotic. Well, what do we do with schizophrenics and psychotics? We treat them. We give them massive doses of antipsychotic medication, and that knocks them back into a reality where we want them to be. But let's suppose that those people who have presented the so-called symptoms of psychosis, schizophrenia, paranoid schizophrenia, break with reality, suppose they become dysfunctional in their social settings, in their society.
let's suppose that there's something else going on in their existence besides psychosis. I think he's trying to say that those people can see something we are not able to understand. So something we can't understand, we fear it, and we think that we should get them back to the places where we are standing. How well said is that? Thank you. That's beautiful. That's a beautiful statement. Okay. And I have a document with me which comes from a West African healer from Burkina Faso, from a tribal healer. And the healers, I don't know about in India, the natural healers, you know, the healers in the bush, the healers in the jungles, the healers from the tribes. But in Africa, the healers have gone through those experiences. And we know them, you know, we know them in the literature. These are the shamans, these are the mystics, and these are the healers. And that fellow went to the United States and studied for a PhD. And he was taken to a psychiatric ward. And his observation was, look at all these natural healers struggling to become what they could be, and we are knocking them down and not allowing that process to take place. Okay, so, and the natural healer from West Africa, he said just approximately what you just said. You know, let's suppose we don't want to hear from these people. They've got things to say and we don't want to hear it. Well, we're so satisfied with ourselves, you know, that we can sit around and listen to the President of the United States declare to the United Nations General Assembly that he will destroy North Korea. Well, isn't that beautiful?